हेलो एवरीबॉडी, कनाडा एंड इंडिया एंड AIRF सभी को बहुत बहुत नमस्कार. दिस इज योर host Dr. Vandana Shrivastava with Anupam Shrivastava. So today we are acknowledging International Day for the Elimination of Violence Against Women. UN ने इसको घोषित किया था 1993 में और आज B4U रेडियो के मंच से हम कुछ ऐसे लोगों को लाए हैं जो इसके संबंध में बात करेंगे. So Anupam, all yours. Thank you, Vandana, and thank you, folks, for joining, all who are listening or all who would be listening. It's a great day. UN has commemorated the 16 days to create this awareness. It's a long topic, like it's a topic which has been existing for so many years, thousands of years, and would it go away? I don't think so. However, every day we can always create that awareness. I'm so proud to be part of a radio station who has come forward to talk about these things. Radio, media, as much as we love entertainment, we also love edutainment, infotainment, and the 4 pillars of V4U Radio makes every listener feel so proud. One of the pillars is women empowerment. As I said, this is something which every individual has seen at some point in his life, Vandana, and as a CEO of radio, when I see my folks, my radio jockeys, my listeners taking keen interest in topics like this, I really feel great. Plus, sitting in Edmonton, Canada, I'll tell you that we are constantly engaging such organizations. I was just attending a breakfast just yesterday. An organization, wonderful organization called the Today Center organized this breakfast, which is against, they help victims of family violence and survivors of domestic violence. And so we had such a great time talking to corporates, talking to some keynote speakers. And today we are here celebrating, treating awareness, commemorating the 16th day, and V4U Radio is absolutely proud. And we have got some great guests today who will be joining from every part of the world. We've got guests from Dubai, we've got guests from Edmonton, we've got, of course, great guests from India as well. So it should be a great show. I know these shows are not as entertaining as watching some of the Hollywood and Bollywoods, but this is a very important thing, which I really appreciate people coming on and understanding the importance of this. So let's begin the show today. Vandana, who do you want to bring on first? I just want to show a small clip before that. And उसके बाद मुझे लगता है कि I will be bringing my co-founder Madhavi ji और हमारी जो पहली गेस्ट हैं, and after that it will go to Angela. So let me start, Anupam. Absolutely. हेलो एवरीवन, मैं तो अपनी ओर से, अपने को फाउंडर्स अनुपम और वंदना की ओर से, V4U टीम की तरफ से मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं कनाडा, इंडिया और दुबई से, उन सभी का स्वागत करती हूँ. और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज के दिन हम जो महिलाओं के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको एक तरह से एक्नॉलेज करने के लिए हम यहाँ आए हैं. तो अपने जो स्पीकर्स हैं सुनेंगे उनको. So Angela, आपका you're most welcome. We are very happy and delighted to have you here, and we want to hear more about. It's our pleasure. Thank you very much. And let me just take a few minutes not a few minutes, but maybe a short elevator pitch to introduce Angela Morris. Angela, I met this beautiful girl at an event called Daughter's Day. It is one of the most prestigious event organized by the Canadian Civil Society, and every year they felicitate some of the women who are doing such great leadership work. And Angela is a recipient of Daughter's Day Award for 2023, and that's where I met Angela. And when I was talking to Angela and learning about the story, I was just mesmerized to see the leadership skill in you, Angela. Embody Her is the company which she is running at this time in Canada, in Edmonton, and of course inspiring so many girls, so many women around her. Angela, welcome to V4U Radio. Thank you for having me, Anu. I appreciate you. I'm happy to be here. So your journey has been a very interesting journey, I know. I mean, life, I wish it was easy for all of us. It is never easy for anyone. It is a tough life we live.
toughness in different ways. And I always say, I thank the difficult times, because that times made me tough, and times made you tough too. A journey which you've lived for 20 years. I don't know if how comfortable you are, because today is the time to talk about it. I really want people to listen to such stories, such heartful stories where leaders just stood up and they did not look back ever since they just emerged as leaders. So, Angela, why don't you walk us? How is this day relevant to you? Oh, this day is extremely relevant. It resonates with me. I empathize with all women and young girls going through any sort of trauma and violence against them. My journey started with undiagnosed childhood trauma, and that led me down a path of no self-worth, low self-esteem, and it led me to all the wrong people and all the wrong situations. My gosh, it led me into the world of sexual exploitation, addiction, mental health illnesses, and it was very, very difficult. It's amazing for me to see how many resources there are now, because for me, my gosh, 20 some years ago now, when I was trying to get out of everything, there was no help, and the help that was there, they were very judgmental. Very quick to be judgmental towards me and my situation. I was a young mom. I was married young, divorced young, and that marriage was awful. I was able to get out of that marriage. It was extremely abusive, which is exactly why what I do and connecting with people like yourselves is so, it's just aligned with my purpose because of everything I have gone through. So I'm proud to say now that even though I've gone through everything I've gone through, I am 4 years sober. I'm running a successful business. And I'm here as living proof that all things are possible at no matter what age. I'm 46 years young and doing these things now, and life is just beginning for me. So whereas I wish I didn't have to go through the things I did, I don't have any regrets. So now I'm just here to give back and be a support to those who are going through these awful crimes against them. Okay, give me a दोस्तों हमारे साथ जुड़ रही हैं कुसुम दत्ता जी. कुसुम दत्ता जी is also a woman, a leader, and it's always thrilling to see Kusum ji on the social media of VP Radio. Kusum ji, आपका स्वागत है, तहे दिल से, हृदय से स्वागत आपका. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक नियत होती है कि जो भी आए उसकी जो भी मैक्सिमम हो सके हम हेल्प कर सकें, बस ये होता है, सपोर्ट कर सकें. पर पता नहीं रात को तुम सोचते हो, बैठते हो कि आज ठीक हो गया, और तब तक एक फोन आ जाता है और कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं. पर एक बात है, कहीं ना कहीं अपने आप को सोचो कि हम जितनी हेल्प कर सकें. वंदना नोज मी वहाँ पर थी. वंदना ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है. वंदना ने खुद ही बहुत काम करती हैं. कोई भी लेडीज की, ब्लू कॉलर वर्कर्स की इश्यूज तो वहाँ बहुत हैं. ये दुबई जो हा हू दिखता है, सब अच्छा है, वो बहुत अच्छा है. लिविंग इज वेरी गुड. लेकिन आप ये सोचो, बिल्डिंग बनाने में हजारों मजदूर भी तो लगे हुए हैं ना, उनकी मुश्किलें अलग है. हम इतने प्राउडली कहते हैं, अरे हमें वहाँ सर्वेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत मिल जाते हैं. पर वो सर्वेंट्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे लेडी हो चाहे मैन हो. क्या बोलूँ, डिफरेंट तरह से शोषण भी होता है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे इमोशनल हो, और चाहे फिजिकल हो. बहुत सारी चीज़ होती हैं. तो ऐसे कई किस्से आ जाते हैं. एक दिन की आपको बात बताऊँ, रात को फ़ोन आया कि क्या आप सुबह काउंसलेट आ सकती हैं. हाँ जी, आ सकते हैं. तो वहाँ गए तो पता लगा 4 लड़कियों को वो कहीं से निकाल के लाए हैं. वो 4 लड़कियां कौन थी? एक ने तो 12th पास किया था, एक कुछ BA कर रही थी, एक MBA करके इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चला रही थी, मतलब वेल सेटल्ड थी, और एक भी कुछ ऐसी एजुकेशन में थी, टीचर थी शायद. वो ये चारों इवेंट कर रही थी. वहाँ कोई दुबई का एजेंट मिला, उसने उनको लालच दिया वहाँ के इवेंट्स करो, उनको पैसे भी दे दिए कि जाके अच्छे कपड़े खरीद लो.
निर्मल हृदय होते हैं सारे जने, इतना कोई सोचते नहीं कि बुरा हो जाएगा। आ गई कपड़े भी अच्छे अच्छे लेके, उनको बार गर्ल की तरह खड़ा कर दिया गया। वो कहीं से एक लड़की के लिए कोई ब्रदर का भाई कोई कांटेक्ट निकल आया, उसने काउंसलेट में बताया, काउंसलेट ने जो ये ऐसे काम करते हैं, आप ये सोचो जैसे यहाँ पे हैं उसी तरह से वहां भी है। प्रोटेक्शन के बिना तो ये काम कोई नहीं कर सकता। तो उन लड़कियों को वहां से निकालना भी मुश्किल था काउंसलेट के लिए, पर वो निकाल लाए। और सुबह उन्होंने कहा आज की आज अभी 12 बजे तक इनको भेज दो, नहीं तो कोई केस बन के इनको रोक ना लिया जाए। तो वो उसमें उनको लेडी का एक प्रेजेंटेशन चाहिए था, मेरे जरूरत उनको कि मैं साइन करूं कि हाँ ये बातें सच हैं, नहीं हैं। ऐसे ऐसे बहुत केस होते हैं। 2-3 फैमिलीज हैं, उनको हमने किसी को 6 साल, किसी को एक को तो अभी तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। मेड है, बिल्कुल हैवी वेट है, काम नहीं हो सकता, बेटी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। कभी मेडिसिन की मुश्किल है, कभी राशन की मुश्किल है, तो रेंट की बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पैसे नहीं होते रेंट देने के लिए। और वहाँ तो बिजनेस वाला है, ये दुबई तो वो है कि पैसा दे तमाशा देख, है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, अदरवाइज लाइफ इज हेल। तो ऐसे लोगों को हम काफी साल से रेगुलर कर रहे हैं। 2 फैमिलीज फॉर्चुनेटली, एक का तो हस्बैंड का केस चल रहा था, पहले वो जेल था, विच वाज रॉन्ग, पर फंस जाते हैं तो उसको किया। वो इतने थैंकफुल थे, हस्बैंड वाइफ घर पे आए कि हमारा सब सेट हो गया और हम अब घर जा रहे हैं वापस। फिर उनको हमने टिकटें दी, 2 बच्चे थे और 2 खुद की टिकटें दी और उनको वापस भेजा। उनको हमने किया 7 years सपोर्ट। हम कौन है सपोर्ट करने वाले, वो तो प्रभु ने हमको एक माध्यम चुना है। हम लोग, बाकी सारे लोग देते हैं, हम कर देते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, लेकिन कुसुम जी ऐसा तो होता होगा कि जब कोई ऐसी मुश्किल में फंस जाता होगा और आप उनके लिए भगवान जैसी आती होंगी, जब उनको ऐसे एकदम जहाँ उनको कोई अपना नहीं लगता होगा, उसमें आप उनको मिलकर सपोर्ट करती होंगी या उनको उनके देश वापस भेजती होंगी, तो सच में कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होंगी आपको। ये तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल से। बस हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। So, दोस्तों बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। He is the General Secretary of All India Railwaymen's Federation. It is the largest labor union in the world, and Shiv Gopal Mishra ji is one of the leaders who has been a role model for so many. शिव गोपाल मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो हृदय से नमस्कार, आपका स्वागत इस मंच पर। आपको भी अनुपम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक AIRF का सवाल है, हमारे यहाँ हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं की सहभागिता के लिए अपने संविधान को बदला, और जब तक शाखा से लेकर के मंडल और जो हमारा 4 टायर स्ट्रक्चर है उसमें जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग उनको न स्वयं मान्यता देते हैं और न सरकार को मान्यता देने का मौका देते हैं। तो अगर महिलाओं को संगठित करके, और हम लोगों का विचार है कि अगर हम उनको संगठित करें और उनको प्लेटफॉर्म पर उचित स्थान दें और उनको जो है वो आगे प्रमोट करने का काम करें, तो ये जो वायलेंस जैसी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो हमें इस बात का बहुत गर्व है कि जया हो, प्रवीणा हो और तमाम हमारी जोनल जो चेयरपर्सन्स, कन्वीनर्स हैं, और अब तो इतनी यंग वर्कर्स हम लोगों के बीच में आ रही हैं कि दे आर बिकमिंग स्ट्रेंथ फॉर अस एंड दे आर बिकमिंग स्ट्रेंथ फॉर अवर ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन एंड देयर एफिलिएट्स। तो इतनी बढ़िया तरीके से वो लोग काम कर रही हैं कि वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर गेटिंग सो मच encouragement from them कि nobody can think of the violence against the women. They are resolving their problems at their own. तो अभी ITF का तो सोच है कि हम 1930 तक वायलेंस को दूर कर पाएंगे, लेकिन हमने बहुत हद तक वायलेंस को रेलवे के प्रीमिसेस से दूर करने का काम किया है। और यहाँ एक ऐसा माहौल हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन फ्यूचर नोबडी विल थिंक फॉर एनी वायलेंस अगेंस्ट, पर्टिकुलरली अगेंस्ट दी वीमेन कॉम्रेड्स। तो ये हम लोगों की सोच है और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अनुपम,
Tamanna is here. Tamanna is young blood. She is like the youth, voice of youth today. So Tamanna, hi, welcome in our Hi. show. Namaste, Yes, Tamanna. Hi, namaste, namaste. Hello, everyone. Hello. Hi, Tamanna. Hello. Hi. How are you all? Yeah, we all We are are very fine. well. Thank you for joining. And now I Thank think you we for have having me today. Thank you for having me today. And to the audience today, about the domestic violence, all I want to say to everyone watching here is to speak up. Because 99% of the times I've seen girls are not speaking up, either because of the pressure or because of the fear or because they're scared from the society or how the people's gonna take them, if they're going to get support or not. Because 90% we see people talk, but nothing comes to the execution. Angela, I have a question for you. You are a survivor. You have led a very tough life when you were trying to seek out help. And I remember your story when you were sharing that. My question to you would be, what did you do? What did you do when you felt that yes, you were abused in a relationship? Tamanna, you certainly have the power to speak up, to break the silence, and such a good opening word when you said that people should speak up. What Yeah. do you see right now? What type of violence do you see? Is it just physical? Is it just emotional? Is it just mental? Is it just economical? What type of violence I do think you more of experience and see verbal on is a daily basis? Yeah, exactly. I agree to what you're saying. More of the things that are going are there in the verbal thing. Because girls are not even able to speak for themselves. When verbal violence is done to them, it is done in such a way that they're just showed up that they're being cared for, they're being loved. The humor is created for girls. They're said something very violently, and they're not able to speak up for themselves. It's very important to give a comfortable zone to girls to speak up for themselves so that they can come up for themselves, they can take a stand for themselves. They should give in a protective and a good environment that they feel safe enough to come and speak for themselves. I think that is very important. I started from an early age feeling it was acceptable to be verbally and emotionally abused because my abusers could see me coming a mile away because I had no self-worth and no self-esteem. So I would literally do anything for love, or companionship or friendship. So once people could see that, it was game over for me. So it was very difficult because it started out verbally and then emotionally, and then your self-esteem, it makes it worse. And then as I became older, there's financial abuse, because when you feel financially stuck, that you can't go anywhere, that you're codependent on someone else financially, that makes it even worse. And then again, when people look at you, then think, oh, well, she's well cared for. Look, she's being taken care of financially, but they don't know what's going on inside the home. And that's what makes it so much worse. It's so hard to get out of a situation like that. And where I was coming from, I've had family members ask me like, oh, well, what did you do to cause that? Like, you chose that. And again, I'm a mindset coach, so I get it, right? We're all accountable for our choices, but unless you're in that situation, you have no idea. So it was that's what made it really difficult for me, and took me decades to become the woman I am today, because it was really hard to access help, genuine help, without being judged. Just to let all my viewers know, Angela Morris owns Embody Her Coaching, and she's a mind coach, and also she has launched a product line. She's a very successful entrepreneur and recently got approved to sell her products online on Walmart and Amazon. So of course,
Many congratulations, Angela. Looking forward to working with you here in Canada. Angela would be selling the products on V4U platform as well. So we are collaborating to bring to work on the women empowerment side, and we will touch upon the product line very soon. But going to Vandana. Vandana is the Chief Operating Officer, COO of V4U globally here, and of course, so proud to work with this girl because she is associated with almost 6 to 7 organizations I've known. There could be more out there. Vandana, what do you see? I mean, as a host, as a man host to this topic today, I am so heartfelt. But I want to know from you, आपके नजरिए से आप जिस तबके पे जाती हैं, जिस लोगों से मिलती हैं, आज किस तरह की प्रॉब्लम आप देख रही हैं? अनुपम, ये हर तबके की अलग प्रॉब्लम है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्लम्स, सो वायलेंस एंड हैरासमेंट एक डिफरेंट लेवल का दिखता है. मिडिल जो फैमिली आती है, सोसाइटी जो 3 भागों में बटी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. इट इज़ वेरी शॉकिंग कि अपर क्लास में भी वायलेंस है और बहुत बुरा तरीके का वायलेंस है. हाथ उठाना इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आप फिट हैं, आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो आप अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं और हाथ उठा देते हैं. दिस इज़ द वन थिंग. एंड सेकेंड, जो मुझे लगता है, जो हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, सिंस आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया एंड दुबई ऑल्सो, यूएई. तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी अपब्रिंगिंग जो शुरुआत में हमारे बच्चे देखते हैं, जो सीखते हैं, जैसे आपके घर का कल्चर है, आपने बचपन से अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दिया है, इक्वालिटी सिखाई है, प्रॉपर पोजीशंस दी है, कभी लड़का या लड़की में डिफरेंस नहीं किया है, तो वो बच्चे बड़े होकर ये काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं है. लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे फादर ने हमारी मदर को डांट दिया, या मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि ओह ही इज़ अ बॉय, यू कैंट गो आउट बिकॉज यू आर अ गर्ल, जो जनरली विच इज़ द ट्रेंड इन इंडिया. इवन नाउ आई फेस एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट आई एम टर्निंग 2 years, आई सी दिस. तो यहाँ पे ये बचपन से ही बच्चों के अनकॉन्शियस ब्रेन में ये बातें आती रहती हैं, और वो इस तरीके से ही बड़े हो जाते हैं, अनुपम. एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग कि देयर इवन आफ्टर गेटिंग द इक्वालिटी, वी फाइट फॉर इक्वालिटी. मैं हर बार कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अस राइट ऑफ इक्वालिटी, स्टिल देयर इज अ क्लॉज कि वुमेन इक्वालिटी होना चाहिए. व्हाई? वी आर इक्वल. क्यों दिया गया है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग. एंड नाउ आई एम सीइंग व्हेन आई एम गोइंग अब्रॉड एंड स्टडिंग सो मेनी थिंग्स कि इट्स नॉट ओनली इन इंडिया. ये डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज की भी प्रॉब्लम है. दिस प्रॉब्लम इज एवरीवेयर. सो इट्स इन अ डिफरेंट वे. कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर क्लास, मिडिल क्लास में थोड़ा कम है, और हायर क्लास में वायलेंट भी है, लेकिन वर्बल, दैट nobody understand this verbal harassment. जो वर्बल आप किसी को टच करते हैं, इट हर्ट्स द मोस्ट. वो इतना तकलीफ देता है. लाइक टू ऐड, जो वंदना दीदी ने बात बोली है, दैट जितना भी वायलेंस होता है, जो स्पेशली फिजिकल वायलेंस में आ जाता है अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में, it is because of one more reason. These gents and these patriarchy people try to think कि इनकी बात माननी चाहिए, चाहे वो verbally आप मानो चाहे नहीं मानो. एंड जब इनकी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि verbally इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, या mentally emotionally they're not able to influence the other person, they try to use their hands or anything whatsoever come to their hands to show physical violence on women. तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा गलत है. अगर मैं जनरेशन, जैसे कुसुम जी बैठी हैं, उन्होंने 3 जनरेशंस देखी है. शी इज सिंग तमन्ना, मी, शी इज ऑलरेडी लाइक शी इज लाइक माय मदर, सो शी कैन टेल वी आर इन ट्रांजिशन पीरियड. आई मस्ट से थिंग्स आर बेटर टुडे, इट्स चेंजिंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग, वी आर रेजिंग अवर वॉइस. रवीना जी, आपका बहुत आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. तहे दिल से आपका स्वागत है इस मंच पे. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस प्रोग्राम में मुझे एक मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही एक शुक्रगुजार हूँ मैं. और रही बात आज के दिन, जो एक महिलाओं के खिलाफ हम लोगों ने एक जो मुहिम छेड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि मैं हमेशा इस बात देखती हूँ कि महिलाएं इसलिए ज्यादा एक तरह से देखा जाए हैरेस होती हैं, क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती हैं, और इसी इमोशनल पॉइंट से ही लोग उनको हैरेस भी करते हैं, परेशान भी करते हैं. एक तरह से वो अपने मन को नहीं समझा पाती हैं.
तो मेरा आज के दिन महिलाओं से यही कहना है कि आप इमोशनल हो, क्योंकि वो आपका एक गॉड गिफ्टेड है। ये आप इमोशनल हैं, ये किसी के बनाए से नहीं है, आप खुद में खुद हैं। लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ अपनी आवाज को जरूर उठाएं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगी नहीं तब तक आपकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। वो आपने कहावत सुनी है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक माँ के रूप में आप इस बात को एहसास करिए कि जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ, आपकी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और मैं देखती हूँ कि 40% ही महिलाएं जो हैं वो अपने घर में ही नहीं बोल पाती हैं, तो वो बाहर क्या बोलेंगी। और 60% वो महिलाएं हैं जो बिल्कुल नहीं बोलती हैं। वो तो ये सोचती है कि हमारे लिए जो पुरुष है, हमारा पुरुष प्रधान देश है, वो भगवान के रूप में है, अगर मैंने कह दिया तो बहुत बड़ा एक गुनाह हो जाएगा। और 40% महिलाएं हैं जो बहुत धीमी आवाज में अपनी समस्या को सामने कहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, और जिस दिन आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगी, मुझे लगता है कि वो दिन शायद वो एक हमें इस दिन को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी हक को, अपने अधिकार की लड़ाई आप खुद लड़ेंगी। और मुझे ये बिल्कुल मैं जानती हूँ कि आज का जनरेशन, आज की जो हमारी महिला बच्चियां हैं, वो इस बात को समझती हैं, और एक दिन जरूर आएगा। वो गाना है ना कि हम होंगे कामयाब, तो शायद हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर होंगे। धन्यवाद। As a leader of this organization, आपके अपने कुछ टारगेट्स होते हैं इस साल, हम ये कोशिश करके इस नंबर को ऐसा करें कुछ। हाउ डू यू मेजर दिस? आप इसको कैसे कहते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम वाकई सही दिशा में जा रहे हैं? प्रवीणा जी। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि टारगेट तो तभी पूरा होता है जब सबका सहयोग होता है। और टारगेट मेरा सिर्फ इतना रहता है कि हम किस तरीके से महिलाओं को एक मोटिवेट करें, और यूनियन में जोड़ने के लिए भी मेरा पूरा रहता है। यूनियन में जोड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि वो किसी तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि ये टारगेट मेरा सिर्फ उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का होता है। बाकी अगर उनमें कुछ बदलाव भी आता है तो उसको भी हम लेके चलते हैं, कुछ नया करने का होता है वो भी करते हैं। बाकी जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी का कोई आदेश होता है तो उस पर भी हम लोग अमल करते हैं। लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि हमारी रेल में काम करने वाली महिलाओं को इतना आत्मविश्वास में भर जाए वो कि अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने साथ हो रहे अत्याचार को एक तरह से लड़ाई लड़ने का उनके अंदर जज्बा हो। यही मेरा टारगेट हमेशा रहता है, और कितने % हो जाए ये मैं छोड़ देती हूँ उन्हीं लोगों पर। यही मेरा टारगेट है। कहते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस। आप इससे सहमत हैं प्रवीणा जी? जया जी? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम जब तक लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक हम, मतलब मुझे लगता है कि वो एक बंद, कहते हैं ना, मुट्ठी में ताकत होती है, उसी कहावत को चरितार्थ किया है इस बात से आपने। और हम लोग की यही कोशिश है कि वो एक महिलाएं जहां जहां हैं उनको इकट्ठा कर बना करके आवाज बनाए, एक ताकत बनाए। Thank you all for joining, but I'll go around the table, and of course I promised Angela that I will talk about what great things she has been doing. As I said, Angela, I'll start with you and then go quickly around the table. Sure. Why don't you tell about your product line, what the product lines do, how you are approaching young women, girls, corporates, and how you are spreading this such a wonderful business around in Edmonton, making the girls and women empowered. Yes. Okay. So a huge thing for me was journaling. So I would buy a lot of journals to write. And then I thought, why don't I make my own? I love the self-affirmations. And again, writing is very therapeutic. So I've created my journals. This is the 2023 version. I don't know if you could see it well.
and the back here. So everything is very empowering for women and young girls. So this is a planner that I've created that you can use it for any point of the year. So you don't have to start at a certain, like, January to December. It's for any time. I've got candles, all natural. They smell wonderful. Notebook. This one's still, it's packaged in the plastic. And so to me, writing, again, is very therapeutic. It brings you back to self. And all my products are self-love, empowering, because self-love is the best love. And that's my goal, is to bring women from trauma to transformation. And I'm so happy to let all the viewers, listeners, jockeys, participants, panelists know that Angela has offered to create an e-journal for V4U radio people, and it will be based on some Sanatan Dharam kind of e-journal, and that would be a gift that we will send out to all the winners of any contests go forward. So that e-journal will be Angela's, and I can see that Jaya ji and Praveena ji is bringing back. This is called Women Empowerment. Thank you so much, AIRF, for being such a great partners. इन लोग के संग जब भी आते हैं एनर्जी डबल हो जाती है, स्फूर्ति आती है, और इतनी अच्छा इंस्पायरिंग ग्रुप मैंने अभी तक जिंदगी में देखा. इसीलिए we wanted to be, and we have been elected as the radio partners in India and abroad. So thank you so much all. And I was just going through the product lines again. Angela has offered to design some product lines exclusively for V4U radio. E-book होगी जिसको कि वो कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, and उसमें जो messaging होगी वो it is be catered to the Indian audience and also audience of the culture and choice. वो अपने आप हम लोग करेंगे design. So thank you so much, Angela. Going to Welcome. Vandana, any last few words before we end the show? Yeah, I just want to thank you and SGM. First of all, 7 ladies who you guys are talking about the women empowerment thing, being male. So it's really very motivational, Anupam, and I'm getting so much motivated as always when I talk with you, even SGM, with my husband. क्योंकि ये जो नज़रिया है लड़कियों को देखने का, औरतों को देखने का, जो तुम लोगों का नज़रिया है, ये नज़रिया भगवान कर रहे हैं. हमारी नई जनरेशन्स, पुरानी ओल्डर जनरेशन्स, हर जनरेशन्स के मेल के पास आ जाए. आई डोंट थिंक प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी. एम्पैथी, लव, थोड़ा बहुत सपोर्ट और इज्जत, क्या चाहिए? सबसे बड़ी ज़रूरत है नज़रिया चेंज करने की. बस एक ये चीज़ हो तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा. तो दोस्तों, आज आपने V4U रेडियो के पैनल पर एक नई शुरुआत हमेशा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉपिक पुराने होते हैं, नज़रिया, अंदाज, लोगों के कहने का ढंग बदल जाता है. और आज हमारे पास एक अच्छी generations. I think we've got all the lively generations here from their viewpoints, sharing the viewpoints. I thank you all for taking time. I know it is quite late here in Edmonton, so thank you, Angela, for taking time.